Okay, so hi everyone, this is your host Saloni here, and I hope y'all are doing absolutely amazing. And we have an amazing trainer Ayushi here. So Ayushi, can you say a hi to everybody? Hi everyone. So hello everyone, I will quickly give you a brief introduction that what we are going to do today, and where you can find the recordings and everything. And उसके बाद we are going to start with our session. So आज का जो सेशन होने वाला है that is going to be a very fun look because we are going to do neon liners. अब अगर आपने आजकल इंस्टाग्राम पे देखा होगा तो नियॉन लाइनर्स काफी ज्यादा ट्रेंड में है. फंकी कलर्स ऑफ लाइनर्स एंड नियॉन लाइनर्स इन ट्रेंड एवरीवेयर. तो वी आर गोइंग टू रिक्रिएट दोज लुक्स ओनली. सो आज हम एक बहुत ही मिनिमल सा बेस करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू डू नियॉन लाइनर्स एंड वी आर गोइंग टू डू फुलर लैशेस विद द हेल्प ऑफ मस्कारा. So this is basically our module जो आज हम cover करने वाले हैं. And yes, don't worry, we're going to have it in both the languages. दोनों ही languages में पूरा session होगा. And if you want the recording, PDFs and the product list, that will be available on the Pankhuri app itself. The link of the app is given in the description box. You can go down there, you can check it out, and you'll know everything. सो ये पूरा का पूरा सेशन दोनों ही लैंग्वेजेस में होगा. इसकी रिकॉर्डिंग, पीडीएफ, प्रोडक्ट लिस्ट, सारी की सारी चीजें आपके ऊपर अपडेटेड हैं. आप ऐप पे जाकर के चेक कर सकते हैं. आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. एंड अगर आपने इस कोर्स के लिए रजिस्टर नहीं किया है तो प्लीज डोंट वरी, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है. यू कैन गो देयर एंड यू कैन चेक इट आउट. सो यस, आई नो कि आप सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स अ न्यू लाइनर लुक. हु डजंट वांट्स टू लर्न इट? So without wasting any time, let's start with the session, and over to you, Ayushi. Thank you, Saloni. Just put me on spotlight. Yes, yes, for sure. Just give me a second. Yes, you are on Okay. spotlight now. Yeah. Okay, so hi everyone. As Saloni said that we will be creating a look using neon liners. And of course, that is very much in. So I will be doing an eye makeup using the neon eyeliner and a complementary color to that neon eyeliner which can be used in your eye makeup will be demonstrated. सो नियॉन लाइनर्स हम लोग प्लेन भी यूज कर सकते हैं जस्ट वन स्ट्रोक ऑफ द लाइनर वी कैन ट्राई एंड क्रिएट अ आई मेकअप लुक आल्सो यूजिंग the for example if I'm going to use a pink color neon liner, what complementary colors can I use with that particular eyeliner color that I'm going to be using? So that is what is going to be covered today. And we will start with a little bit of skincare. So, firstly, I am using this lip voluminizer from MyGlam, basically for extra hydration and the plumping of my lip, ताकि naturally मेरे lip का size at its maximum हो, so that I can get fuller lips without any artificial support. So that's how it looks like, and that is how the product is. I will just, and it's in a pen like structure. तो ऐसे करके आप प्रोडक्ट बाहर निकाल सकते हो एंड जस्ट पुट इट ऑन योर लिप्स. So this is from MyGlam. Same lip injection you can get it from Too Faced also, Victoria's Secret also, and MyGlam also. So you can see here, we are first starting with skincare. और सबसे पहले हम अपने lips को prepare कर रहे हैं, क्योंकि maximum लोग के lips काफी chapped होते हैं. तो lipstick जब आप use करोगे तो it is not going to look very nice. So इसलिए सबसे पहले आप lips करेंगे. Lips के लिए यहाँ पे हम एक plumping lip balm use कर रहे हैं, which is by My Glam. My Glam का pumping lip balm हम यहाँ पे use कर रहे हैं. ओके. सो क्या होता है इसको लगाने के बाद देयर विल बी अ टिंगलिंग सेंसेशन ऑन योर लिप्स. घबराना मत कि ये क्या हो रहा है. दैट इज जस्ट फॉर द वॉल्यूम ऑन योर लिप्स. And then we'll apply a little bit of cream, a moisturizer. So if you have an oily skin, dry skin, very dry skin, very oily skin, जो भी है, you have to moisturize, hydrate your skin. If you are under someone who's having an oily skin or normal to oily skin, you will use a gel-based moisturizer, जो कि ये Rio Herbs से है. And if you're someone who has normal skin tone or normal to dry, you'll do something cream based. And if you have very dry, then you'll use an oil. So abhi to I'm using a cream.
because I am normal to dry, not very dry, but if the situation requires, I'll apply the oil also. तो ये क्रीम जो है लवर्स से है, इट्स अ नेचुरल क्रीम and it has jojoba oil, it has castor oil, it has I think I tell you some seeds, yeah, almond oil and carrot seed. So that's the importance of this cream. That ये carrot के seed से बनी हुई है, which is very good for the skin. And a regular use of such good products will always result in a good skin. And I will now just remove the voluminizer. आप इसको 1 मिनट तक के लिए लगा सकते हो. You guys can already see that there is. So see, this is my lip and there is already an overlining. जो थोड़ी सी there is a plumpness on my lips. This is what the voluminizer do. I can leave it for another 1-2 minutes, no harm. And I will start with the eye makeup. So eye makeup करने से पहले make sure, especially in case of a neon look, if you're doing that, your eyes are very well, the eye base is very well done, and you are using something lighter in shade to conceal your eyelids. So I am using this concealer. No, I'll go for the other. So I am using this concealer from Krylon. तो ये Krylon का Derma palette है. इसमें 6 शेड्स होते हैं. It can be used as foundation, contour, correction, anything as per what the skin requires. And I'm going to take sufficient amount of this lightest shade, and apply it on my lips. So next you can see here, after doing our lips, we did our skin. So skin के लिए हमें moisturize किया है सबसे पहले. Like clean तो obviously आयुषी पहले ही कर लिया था उन्होंने. उसके बाद अब वो moisturize किया उन्होंने. So moisturization के लिए आपकी भले ही oily skin हो चाहे dry skin हो, आपको moisturize करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. बस you have to make sure कि आप correct form of moisturizer use कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन है तो आप जेल यूज कर सकते हैं. ड्राई स्किन है तो क्रीम्स या ऑयल यूज कर सकते हैं आप. एंड इस नॉर्मल या फिर कॉम्बिनेशन है तो ऑफकोर्स जेल आप यूज करेंगे. सो दिस इज हाउ यू कैन चूज योर मॉइस्चराइजर, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मॉइस्चराइज. आफ्टर दैट हम अपनी आईज जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं. आईज प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको एक लाइटर कलर ऑफ कंसीलर यूज करना है. क्यों? क्योंकि हमें एक मैक्सिमम पॉप चाहिए कलर का. मैक्सिमम पॉप कब आएगा? जब हमारी आईज जो है वो सबसे पहले तो एकदम अच्छे से एक स्किन टोन में होंगी, एंड प्लस जब वो थोड़े लाइटर शेड में होंगी तो कलर जो होंगे वो पॉप होंगे. इसलिए हम एक लाइटर कलर ऑफ कंसीलर लेकर के उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे. यस आयुषी. And I will set it with some powder. तो जो भी notice कर रहे होंगे, there is a sudden change in the size of my lips. It is increasing, like I can feel, and the tingling sensation is also increasing. So, all these measures can actually result in a very flawless and very enhanced makeup. हम लोग overlining of the lips भी कर सकते हैं, लेकिन वो most of the times हटने लग जाता है after, you start consuming any eatables. So, if you take measures from the very beginning, then you can get what you actually are looking for. तो अब मैं एक बहुत अच्छा पेस्टल पैलेट यूज करने वाली हूँ फ्रॉम ब्यूटी ग्लेज. ओके, सो दिस इज अ 5 बुक पैलेट. इसमें टोटल 5 सेक्शन हैं एंड इसमें बहुत सारे पेस्टल कलर्स हैं, इसमें बहुत सारे न्यूड कलर्स हैं, इसमें शिमर्स है, ब्रॉन्जर है, हाइलाइटर है, ब्लशर है. सो दैट इज हाउ दिस बिग इज दिस पैलेट. ओके, and I will just give a little shading of, let's say, this color. ये वाला जो कलर है on my crease.
तो बहुत ही हल्के हाथ से हम लोग काम करेंगे। आई एम टेकिंग सम and I'm just applying it on the crease like this. So here you can see. Hold the brush. One second, Saloni. So sorry for cutting you. Hold the brush very closely so that अब और बड़ी crease ना बनाओ. We have to be very precise when we do neon looks. Okay. So here you can see we are using a palette by Beauty Glaze. Beauty Glaze का हम palette use कर रहे हैं and we have used a purple kind of color here and we are placing it on the crease area. Now while placing it on the crease area, you have to make sure that you're holding your brush from like very close because we want a very precise application here. क्योंकि हमें एक बहुत ही precise application चाहिए इसलिए हम अपने brush को थोड़ा पास से पकड़ेंगे ताकि एक बहुत बड़ा crease ना form हो. इनफैक्ट एक बहुत ही अच्छा प्यारा सा precise सा आपका crease area form हो. Yes, Aishi. So I'm not even creating a full crease. मैं एक semi crease ही form कर रही हूँ. And that is how even you guys can do. I'm not taking it to the inner corner because inner corner में I'm going to use the complementary colors, which I'll show you. So you can see हम एक half crease create कर रहे हैं. We are just creating a half crease here. Why? Because we are going to put some complementary colors on the inner corner of our eyes. And don't just keep blending it कि वो मतलब वो crease ही खत्म हो जाए. Keep it prominent enough. जैसे usually what we do is that we just blend the color and then we apply the second deep color. अभी तो हम एक ही color लगा रहे हैं यहाँ पे तो हमें इतनी ज्यादा blending की जरूरत नहीं है. And then you can use a darker shade. Not very dark, but a very little tint of this dark purple color. I'll show you how to use it. तो मैं एक छोटा ब्रश ले रही हूँ and this dark color. And just on the lash line, give a brush up. हम सिर्फ ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो नियॉन कलर होता है या तो वो आपको डार्कनेस में दिखता है या वो आपको किसी डार्क चीज पे दिखता है. या तो यहाँ पे अंधेरा और मैं नियॉन कलर लगा रही हूँ तो वो बहुत प्रोमिनेंटली विजिबल होगा या किसी डार्क चीज पे जैसे कि हमने अगर कभी देखा हो तो ब्लैक कलर के आउटफिट पे नियॉन ज्वेलरी बहुत स्टैंड आउट करती है. So the reason why I'm putting a darker color on my lid is so that my neon color stands out more. You know, that's how neon colors are, be it a makeup, be it a liner, be it an outfit or anything. So But next not you much can, of it, very little of it. so next you can see हम यहाँ पे darker color of यूज करें हमारे आई शैडो का. क्यों? क्योंकि जो नियॉन कलर्स होते हैं वो या तो आपको अंधेरे में दिखेंगे या फिर जो डार्क चीजें होती हैं उन पे ज्यादा प्रोमिनेंट दिखते हैं. तो अगर हम लाइट बेस यूज करेंगे तो इट इज पॉसिबल कि हमारा जो कलर है वो बहुत ही प्रोमिनेंट वे में ना दिखे. सो इसलिए हम एक डार्कर कलर ऑफ आई शैडो यूज कर रहे हैं अपने आईलिड्स के ऊपर एंड देन बाद में हम इसी के ऊपर अपने नियॉन शेड्स को यूज करेंगे. So if you guys have noticed, जब मैंने अपना कंसीलर लगाया तो मैंने उसको अपने टीयर डक्ट पे भी कवर किया. रीजन बीइंग क्योंकि यहाँ पे मैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स लगाऊंगी अपने ताकि जो भी मैं नियॉन फैमिली का ही अगर कॉम्प्लीमेंट्री कलर लगाती हूँ या कोई ग्लिटर लगाती हूँ वो और प्रोमिनेंटली विजिबल हो because our tear duct is comparatively darker in color if we compare it from the whole face. So it is very important to bring back it to the balance. So you can see हम लोगों ने अपने इनर कॉर्नर्स को भी स्टार्टिंग में कंसील किया था. व्हाई? क्योंकि हम यही भी अपना जो मेजर
कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो यूज करने वाले हैं, तो वो कलर्स अच्छे से पॉप आउट हो, इसलिए आपको अपने इनर कॉर्नर्स को भी अच्छे से कंसील करना है एंड रेडी करना है। Okay. Now I will use the complementary color, very little amount of it. So I have two options. ठीक है. अब complementary अगर मैं pink, I am going to use a pink liner. What is the complementary color to pink? That is green. ठीक है. Similarly, if we talk about, let's suppose I'm doing a orange liner. तो orange का complementary होता है blue. That is a complementary chart. You guys can Google it and see कि orange के लिए complementary होता है blue, red के लिए green भी होता है, and similarly pink is from originated from the red family. So again we have a complementary color green. Oh yeah. So I will show you how. So either we can go completely matte green or a little shining green. Because our eyeliner is matte in nature, तो हम थोड़ा shimmering green ले सकते हैं. So I will be using this green color. और मैं इसको अपने tear duct पे लगाऊंगी अच्छे से. So I'm taking a very precise brush जो मेरे tear duct को अच्छे से cover कर ले. And I will cover the tear duct first. And then spread it. सो यू कैन सी हियर, हम यहाँ पे अपना जो कलर है वो लगा रहे हैं, जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा। आप कॉम्प्लीमेंट्री कलर के जो चार्ट होते हैं वो आपको इजीली गूगल पे मिल जाएंगे, यू कैन गो देयर एंड चेक देम आउट। सो हियर वी आर गोइंग टू यूज ग्रीन, व्हाई? बिकॉज वी आर यूजिंग पिंक कलर ऑफ neon liner, so that is why we have used green in the inner corner of our eyes. और इसको धीरे धीरे आप अपने इनर कॉर्नर पे ब्लेंड करो. ज्यादा आंखों से नीचे मत लेके जाओ because we have to apply the base and it can get merged with it. But yes, in the inner corner you can very slowly blend it. And make sure जो भी आप पिगमेंट लो वो बहुत, कोई भी ग्लिटर जो भी आप यूज करने वाले हो वो काफी पिगमेंटेड हो, या आप फॉइल ग्लिटर्स लो. क्योंकि आप लोग देखोगे कि हम किसी कलर के ऊपर नहीं लगा रहे हैं, इसको सिंपल बेस के ऊपर लगा रहे हैं. एंड यूजुअली ग्लिटर्स सबसे ज्यादा आउटस्टैंड करते हैं किसी कलर के ऊपर. तो मेक श्योर कि उसकी खुद की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा हो ताकि वो अच्छे से दिख सके. Now I'll apply the liner. So the liner which I'm using is from Recode. ठीक है, ये Recode का पिंक लाइनर है. इसका कोई आज सच नंबर नहीं है, बट पिंक कलर में यही अवेलेबल होता है. तो आप Recode की वेबसाइट पे जाके सर्च कर सकते हैं, RECOD. And this is just for 365 rupees. Very easily available and plus very reasonable. And I'll just show you how it looks like. So see, that's how the color looks like. And इसकी दो स्ट्रोक्स तो लगानी ही पड़ती है मिनिमम, बिकॉज ये नियॉन इन नेचर है, तो takes a little while for it to settle. Make sure you have a mirror placed next to you. एंड क्या होता है कि अगर हम ब्लैक कलर का लाइनर लगाते हैं, वो थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे हो भी जाए तो हम उसको स्मज कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं आई मेकअप में तो स्पेशली.
लेकिन नियॉन लाइनर्स के साथ यू हैव टू बी केयरफुल. सो फर्स्ट वी विल बी क्रिएटिंग अ विंग. जस्ट सी हाउ आई डू दैट. और ये तो आप किसी भी कोई भी लाइनर लगाते हो तो विंग का तरीका यही होता है. तो हाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद योर विंग लाइनर इज दैट द मीटिंग पॉइंट ऑफ योर लोअर लैश एंड अपर लैश, ये हमारा मीटिंग पॉइंट होता है. यहाँ पे एक बड़ा छोटा सा गैप होता है, वहां से आपका विंग स्टार्ट होएगा. सो सी हाउ आई डू इट and then join it like this. So you can see here we are trying to create a wing. Wing जो आप create करोगे उसको create करने का easiest form क्या है कि जो आपके जहाँ पे eyes meet होती हैं उसको आप अपना starting point मानिए. वहां से create a line, जितना लंबा भी आपको wing चाहिए उतनी लंबी line. And then when you find कि हाँ ठीक है इतना लंबा ही मेरे को चाहिए wing, तो आप वहां पे रुक जाओ. And then उसके बाद ऊपर मतलब उसी लाइन को लेते हुए आप ऊपर वाली जो आपकी लैश है उसमें जोड़ दोगे. तो ऐसे करके आपका बनता है विंग. And then you will fill it. सो फिल करने के लिए भी नियॉन लाइनर में आपको ऑलमोस्ट ट्वाइस तो फिल करना पड़ेगा उसकी विजिबिलिटी दिखाने के लिए. सो आई होप अभी तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे लाइनर जो है वो लगेगा. Also, there was this one question, Ayushi, that ma'am, can we use serum if we have oily skin? If you have an oily skin, you will use serum only, either a gel based moisturizer or a serum. So sometimes the serum cannot give you the enough hydration. What you'll do is क्या पहले सीरम यूज करोगे बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट अ वाटर बेस्ड प्रोडक्ट. उसके बाद एक मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल कॉन्सेप्ट होता है कि हम सबसे छोटे मॉलिक्यूल से सबसे बड़े मॉलिक्यूल पे जाते हैं. तो जब हम क्लेंजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग भी करते हैं तो पहले हम क्लेंजर यूज करते हैं जिसका मॉलिक्यूल तो मतलब आपके फेस पे रहता ही नहीं, आप उसको वॉश कर दोगे. फिर टोनर जो कि वाटर बेस्ड है, वो कंपैरेटिवली छोटा मॉलिक्यूल होता है, वो वेपोरेट हो जाता है. और फिर आता है आपके मॉइस्चराइजर जिसकी कंसिस्टेंसी भी ज्यादा होती है, मॉलिक्यूल भी बड़ा होता है. तो चाहे वो जेल बेस्ड है, वाटर बेस्ड है या क्रीम बेस्ड है, मॉइस्चराइजर इज बिगर इन मॉलिक्यूल्स. दैट इज व्हाई यू नो इट इज थिक. So if you apply a serum followed by a, if you feel that there is still, a need of little hydration, then you go for a gel-based moisturizer. Okay. So, ladies, if you have any more questions, please feel free to put them here. We'll be more than happy to help you out and we'll be happy to solve those questions for you.
So Ayushi, you're a professional makeup artist, but are you still scared of putting liners, wing liners? I was like even after being a makeup artist, but now because of the practice, I'm not. Because you gain so much of confidence after doing makeups on people and yourself that even if you go wrong, you know that you can fix it. चाहे फिर आप उसको हटा के फिक्स कर दोगे बट आप उसको फिक्स कर दोगे. ह्यूमंस में फियर ही इतना होता है टू फिक्स इट बैक कि खराब हो गया तो उसको फिक्स कैसे करेंगे, खराब हो गया तो उसको फिक्स कैसे करेंगे, कि वो खराब हो ही जाता है एंड एंड में देन दे आर लाइक द फियर ऑफ the fear of failure is bigger than the real fear. So that is what actually happens. I absolutely get you. मेरा खराब हो जाता है लाइनर तो आई एम जस्ट लाइक क्या करूं मैं, अब छोड़ दो, ऐसे ही पड़े रहने देते हैं। कोई नहीं नोटिस करेगा चश्मे पे। Exactly. Maybe चश्मे पहनती हूँ, so I can understand. दिखना ही नहीं Okay, so होता है। yeah. Tell me what are you saying? बताओ बताओ. नहीं नहीं, आई एम जस्ट सेइंग कि दिखना ही नहीं होता है लाइनर वगैरह चश्मे पे, तो कोई चिंता नहीं है। Okay, so I'm using this very bold chunky glitter again in green color on my brow bone. बहुत थोड़ा सा लगाऊंगी मैं because even I'm liking this creativity that we are doing. So yes, ladies, you let us know that अभी तक सबको सब कुछ समझ में आया है and what we have created, have you understood it completely? I'm really liking the look. मुझे बड़े मजे आते हैं सिर्फ फन फन से लुक देखने एंड क्रिएट करने में। I'm really liking the look that you have created, Ayushi. Thank you. We shall complete it Yes. अच्छे से. And then you can also intensify थोड़ा सा. So see the complementary color that we have applied changes the look so much. अगर ये सिर्फ एक पिंक लाइनर होता तो भी अच्छा लगता, लेकिन मे बी ये इतना स्टैंड आउट नहीं करता. आप लोग सिर्फ लाइनर भी ट्राई कर सकते हो, आप उसको डेवलप कर सकते हो. आप एक ग्रीन लाइनर यूज करके इसके ऊपर एक और लेयर ऑफ लाइनर ऐड कर सकते हो. बट आई एम जस्ट saying that when you use your creativity you create wonders actually. Okay, we can see that the lips have grown in size and there is enough moisture also, and I will do my base now. तो अब जिन जिन को ये प्रॉब्लम रहती है ना ये वाले सीजन में कि बहुत स्वेट आ रहा है फेस पे, बेस टिक नहीं रहा है, मूव हो रहा है, केकी हो रहा है, ऑयली हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सो आई हैव अ वेरी स्पेशल ट्रिक टू शेयर टुडे. एंड इफ यू आर डूइंग समथिंग एल्स जरा 5 मिनट के लिए उसको छोड़ दो और देख लो. मैं ये बेस कर रही हूँ, इट इज बेटर कि आप देख लो, कुछ क्वेश्चन हो तो साइड बाय साइड यू गाइस आंसर. ओ आई मीन यू कैन आस्क एंड आंसर. So I've applied the moisturizer on my face, but I still feel the need of some more moisture. तो मैं थोड़ा सा फेस ऑयल लगा रही हूँ क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है. लेकिन yes, guys, I have a dry skin, but when I'm out in the heat, I become very sweaty at times. So I can, call myself combination and somewhere towards dry. So for that, I'm sharing a tip with you all. तो आपने अपने पोर्स को बेसिकली क्लोज करना है या उसको श्रिंक करना है ताकि उससे ऑयल या मॉइस्चर या स्वेट ना निकले, और निकल भी रहे तो बहुत लिमिटेड उसमें लिमिटेड क्वांटिटी में निकले. सो आई हैव अप्लाइड माय मॉइस्चराइजर. उसके बाद आई विल टेक अ गुड प्राइमर. आई एम यूजिंग दिस प्राइमर फ्रॉम पैक कॉस्मेटिक्स. इधर तो आप इसको पूरे फेस पे लगा सकते हो, एल्स आप इसको वहां वहां लगा सकते हो जहाँ पे आपको सबसे ज्यादा स्वेट फील होता है. तो मैं वहां लगाऊंगी जहाँ पे आई नो दैट देयर इज अ लॉट ऑफ स्वेटिंग, स्पेशली अराउंड द माउथ. मतलब अराउंड द माउथ, द मोमेंट यू आर आउट योर अपर लिप्स आर वेट, स्पेशली इन दिस काइंड ऑफ सीजन. एंड अ बिट ऑफ ऑन माय नोज. ऐसे किस कुछ लोगों को फोरहेड पे भी आता होगा, जिसको जहाँ आता है वहां लगा लो, पूरे फेस पे लगा लो.
It's an option. Now what you're going to do is that you have applied the first layer of protection, the first layer of closing or shrinking your pores, which is your primer. Now we're going to lock it with a double protection. So what are we going to do is that we'll take some loose powder. ठीक है, बहुत ही मिनिमल अमाउंट में लेना है, भर भर के मत ले लेना, because then your foundation will crack up. You will take very little amount of powder, okay, and the areas where you have applied your this thing primer, you will apply the powder. So I'm taking very diluted form of powder. दिख भी नहीं रहा, but yes, I can of course feel it on my face. So you can see here what we have done. We have moisturized, then we have added primer, and now we are using loose powder here. Remember, loose powder हम बहुत ज़्यादा नहीं, एकदम थोड़ा सा use कर रहे हैं, just to set everything in. Okay? And we will do the color correction. उसके बाद we can also apply a little bit of illuminating base. अगर किसी को लगाने का मन है तो लगा सकते हो, but if you want a matte base, so this is the step. I will apply the illuminating base from Swiss Beauty on the certain parts of my face, like the high points. उसके बाद correction के लिए I'm using this deep shade concealer from Forever 52. ठीक है, तो जब आपकी जो भी डार्क प्रॉब्लम है is just 1 to 2 shade darker than your original skin tone. If you see, यहाँ पे जो डार्कनेस है वो मेरी ओरिजिनल स्किन टोन से 1 या 2 शेड डार्कर होगी, तो मैं एक डीप शेड कंसीलर यूज कर सकती हूँ. Similarly, if I have the dark problem which is almost 3 to 4 shades darker than my original skin tone, अगर वो डार्क सर्कल बहुत ही डीप है तो आप एक ऑरेंज करेक्टर यूज करोगे, उसको पहले आप डाइल्यूट करोगे. सो आई हैव इट ऑलरेडी ऑन माय पैन, द प्लेट दैट आई यूज. तो आप थोड़ा सा लोगे, उसको जस्ट डाइल्यूट अ लिटिल बिट एंड देन अप्लाई इट ऑन योर फेस. नाउ आई So here you can see what we are doing. We are doing color correction here. So color correction में what we do is we even out our face. So whatever pigmentation, dark circles, maybe pimples and acne you have, you basically conceal them so that you have a very plain face to work on. So that is why we do color correction. And for color correction, we are using a darker color of concealer. If you have very dark pigmentation, then only go for orange color corrector. Otherwise, a darker color of concealer is well to go. Okay, so now I'm using a foundation from Milani Cosmetics, 04 number है. अगर आपकी बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है तो आप कोई ऑयल कंट्रोल फाउंडेशन यूज करोगे, जैसे कि टू फेस की ऑयल कंट्रोल एंड ऑयल रेजिस्टेंट फाउंडेशन. ठीक है, अगर आपकी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है, यू हैव अ वेरी ड्राई स्किन, द मोमेंट यू अप्लाई फाउंडेशन इट टर्न्स इनटू पैचेस, आप ये डर्मा पैलेट यूज करोगे. इट इज अ क्रीम बेस्ड फाउंडेशन. बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है, क्रीम बेस्ड फाउंडेशन यूज करोगे. बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है तो ऑयल कंट्रोल या ऑयल रेजिस्टेंट फाउंडेशन यूज करोगे. अपने प्रोडक्ट्स को चेंज कर दोगे एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ योर स्किन. ओके, so I have a normal to dry skin. I am using a liquid foundation. It's a good dewy foundation from Milani Cosmetics. One big pump of foundation. I'll mix a very little amount of illuminating base from Swiss Beauty. Silver pink इसका shade है. I will mix it and
some makeup picture on my sponge and quickly blend. This should be the motion of blending. No dragging, please. वरना जो जो इतना कुछ करा है आपने फाउंडेशन से पहले वो भी ड्रैग हो जाएगा. And always work in sections. Okay. Never put the foundation on all face and then do the blending because on some areas the foundation will dry up, especially liquid foundation. और जब ऐसा होगा उसको blend करना मुश्किल हो जाएगा, patches form हो जाएंगे, and then you won't get that flawlessly. So if you're doing your self makeup, there is no harm in using your hands. मैंने तो अपना मेकअप पूरा हाथों से भी किया हुआ है, just using my fingers. I've blended the whole makeup, but of course, if you are doing it on a client, never use your hands. It's very unprofessional and unhygienic. Use brushes, use spatulas, use mixing plates, and that is good for you and your client both. So here you can see what we have done after doing the color correction. We obviously went with a foundation. So we usually get a lot of questions that how do you find the correct shade of your foundation? And also, yes, before doing that, we also used an illuminating cream. The illuminating cream that we used was by Swiss Beauty. That's a very good cream. You can go for it. So Ayushi, can you let us know how do we found our perfect shade of foundation? Okay, so how you are going to find out the correct shade of foundation is there are two ways. एक तो practical way है, in which you're going to take the foundation, put it here and drag it till here. अगर वो यहाँ तक भी अच्छे से blend हो जाती है, क्योंकि अगर आप देखो तो ये इस point के बाद मेरी neckline शुरू हो जाती है. There are lines on your neck. So अगर वो यहाँ तक अच्छे से blend हो जाती है आपकी foundation, it blends with the original color, then that's your correct shade. If you want to go like in the same shade of family as your skin tone, अगर आपको एक शेड लाइटर चाहिए तो अगर वो इतने सेक्शन पे भी ढंग से ब्लेंड हो जाती है, that also you can take. The theoretical way is to understand and identify your undertone, कि आप cool undertone हो या warm undertone हो. वो आप कैसे अंडरस्टैंड करोगे कि आप कौन सा अंडरटोन हो, और अकॉर्डिंगली आपके फाउंडेशन के लेबल्स पे लिखा होगा that this is meant for cool undertone, this is meant for warm undertone, and this is for neutral undertone. Like for example, this foundation is for neutral undertone. So anybody who's between the two can also use this, and someone with warm undertone can also use this. Someone with cool undertone can also use this. How do you understand which undertone you are is there is a very small practical that you have to do. When it's sunny outside, just go outside, stand for like 15 minutes under the sun, come back inside, see what you are turning into. Are you being tanned or is there a sunburn on you? आपको रेडनेस हो रही है बहुत ज्यादा या आपको टैनिंग हो रही है? अगर आपको टैनिंग हो रही है तो आप वार्म अंडरटोन हो. अगर आपको देयर इज रेडनेस तो आप एक कूल अंडरटोन हो. और अगर आपको दोनों हो रही है, मानो चीक्स पे रेडनेस हो रही है, फेस पे टैनिंग हो रही है, बाकी तो आप न्यूट्रल हो. So that's how you really find out what foundation, correct shade foundation is meant for you. And there are two ways. One is the theoretical way, undertone, and the practical way I just explained you. So yes, ladies, we hope now you know exactly how to find your shade of foundation. And okay, Aishi, one more question. The illuminating cream that we have used, was it in silver or was it in gold? It's a silver pink. Okay, it was in silver. Okay. So if you have for example, if you have a skin tone darker than mine, then go for the golden one. But if you are somewhere near to me or fairer than me, then silver pink is the correct shade.
How much time are we left with? It is 6:12 right now. So we are still left with some time. So guys, you can ask any other questions related to foundation and related to makeup or even skincare कुछ अगर आपको पूछना है, if I have the valuable answer, then why not? Let's make it very informative for you all. So yes, ladies, let us know if you have any questions, anything. We would be more than happy to help you. So I've applied my foundation and now I'll do the cream contour. Okay, and I'll use this LA Pro Girl. सबसे बड़ी गलती what we do is we all should be knowing our flaws. Most of the times we just take the product and put it like this. It becomes so hard to blend it, trust me. Always dilute your contour product. Take it on the back of your hand or take it on a mixing palette, ठीक है? उसको अच्छे से dilute करो, activate करो और फिर अपने फेस पे लगाओ. तभी वो अच्छे से blend हो पाएगा. So how I'm going to measure my contour? From the tip of my ear, I'll draw the contour line and cover it like this. Maybe the nose area. I do not have a very long forehead. तो forehead पे तब करो जब forehead बहुत लंबा है. ठीक है. Similarly, अब जैसे I have a very prominent jawline, so I'm not doing anything on jawline, but I have an illusion of a double chin or a longer chin. So I'm putting the contour product on my chin. तो कॉन्टूर का मतलब ये नहीं है कि जहां जहां आप जो जो यूट्यूब पे देख रहे हो कि ऐसे 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 तो हर जगह कर दोगे. जहां पे रिक्वायरमेंट है डायमेंशन की वहां पे आप डायमेंशन डालोगे. इफ यू हैव अ वेरी थिन नोज यू वोंट कॉन्टूर इट, जस्ट डोंट टच इट ओनली बिकॉज you don't need any dimension, you don't need to make it thin. So I'm going to squeeze my blender like this और साइड से मैं अपवर्ड मोशन में अपने कॉन्टूर प्रोडक्ट को ब्लेंड करूंगी. So here you can see what we are doing. We are contouring our face. So basically by contouring, we are giving a shape and we are creating some color and adding some color on our face because foundation ke baad, obviously your face is just going to look simple flat. So we are adding some dimension to it. So iske liye you can use any kind of contour shades that suits you. And for contouring, you're going to start from the tip of your ears towards the end of your lips, and then you're just going to imagine a line, create a line, and then blend it in the upward direction. Do not blend it downward, otherwise your face is going to look very droopy. एकदम ऐसा बुढ़ा बुढ़ा सा फेस दिखने लगेगा, तो इसलिए हमेशा ऊपर की तरफ ब्लेंडिंग होगी. Exactly. And now I'm doing highlighting. तो highlighting में basically हम lighter shade of concealer लेते हैं, high points पे इसको लगाते हैं and blend करते हैं. इससे सिर्फ आपके high points नहीं enhance होते, इससे ये भी होता है कि आपकी contouring भी और enhance हो जाती है.
So right now you just saw that Ayushi did the highlighting. So highlighting, what is highlighting? Basically, we are creating some the places where sun falls directly. You are going to highlight those spaces so that एक natural face जैसी चीज create हो सके. You know, some places you will have shadows, some places will be a little more brighter than the others. So that is what we are creating here with the help of contour and highlighting. Okay, so Ayushi, there are a few questions here. So there's a question that how can we take care of the sweat after the makeup? You will carry a bloating paper firstly. ठीक है, bloating paper क्या होता है? बेसिकली एक टिश्यू होता है जो आप मेकअप के बाद यूज करते हो, लेकिन उससे आपका मेकअप नहीं खराब होता और स्वेट एंड ऑयल वो सोक कर लेता है. Second way is that if you see that the makeup is moving from its place because sweat is water. और अगर वो वाटर कैनवस से ही पानी ऊपर से पानी डल रहा है अलग बात है, ओरिजिन से ही पानी अगर ओरिजिनेट हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. घबराने की कोई बात नहीं है इसमें, हो सकता है ऐसा, बिल्कुल होएगा भी. ऐसा नहीं है कि आपका बिल्कुल ऑयल एंड स्वेट आना ही बंद हो जाएगा. दैट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. So what you're going to do is that you'll carry a compact with yourself. When you see that makeup is moving from its place, फटाफट go under, AC or probably a fan. Try to dry it up a little bit, and the moment you see कि वो थोड़ा dry हो गया है, उसको compact से retouch कर दो. फिर वो अपनी जगह पे वापस आ जाएगा. Bloating paper use करके अपना excess sweat आप जो भी है मतलब ब्लोटिंग पेपर में सोक करवा दो. और अगर आपको पता है कि आप एक एक्सट्रीमली, यू हैव टू एक्सपेरिमेंट विद योरसेल्फ, ये सब करने के बाद भी नहीं हो रहा है, तो आपको, आप अगर एक एक्सट्रीमली स्वेटी फेस हो आपका, तो सी विंटर्स में इट्स नॉट एन इशू, बट यस ड्यूरिंग ह्यूमिड सीजन और प्रोबेबली ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट you will use very minimal lightweight products like a BB cream or CC cream, pack it with good compact, and use a blush, do good eye makeup. You have to keep your base very, very plain and very, very minimal if you know that you are extremely sweaty, because then nothing would work. अगर सब कुछ करने के बाद भी स्वेट आ रहा है तो आपको बेस को ही कम करना पड़ेगा अपने. You can take the next question. Okay. So there's a question that, ma'am, how to grow as a makeup artist attracts clients? So firstly, you should have a portfolio. इंस्टाग्राम पे कंटेंट होना चाहिए, एक पोर्टफोलियो होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट चल के आता है थ्रू वर्ड ऑफ माउथ और थ्रू एनी वे, यू शुड हैव समथिंग टू प्रेजेंट. अब वो आप कैसे करोगे? या तो आप शूट कराओगे, या आप कोलैबोरेशन करोगे, डिजाइनर्स को आप कांटेक्ट करोगे, आप फोटोग्राफर्स को कांटेक्ट करोगे, आप मॉडल्स को कांटेक्ट करोगे. आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट एंड आई जस्ट वांट टू ग्रो एंड आई वांट टू कोलैबोरेट, डू यू वांट टू गेट ऑन बोर्ड, ऐसे ऐसे करके. अगर आप ये वाला स्टेज भी क्रॉस कर चुके हो, आपके पास आपके पास फॉलोइंग है, बस आपको क्लाइंटेल ग्रो करनी है, तो फिर आप इंस्टाग्राम प्रमोशन करोगे. इंस्टाग्राम प्रमोशन भी करके देख चुके हो तो फिर आप किसी वेडिंग प्लानर से टाई अप करोगे. वेडिंग गुड है, वेडिंग बायर है, मैं सजेशन दे रही हूँ, आपको देखना पड़ेगा कि आर दे एक्चुअली वैल्यूएबल इनफ और नॉट. एट टाइम्स दे प्रोवाइड यू गुड क्लाइंट्स, एट टाइम्स दे डोंट प्रोवाइड यू गुड क्लाइंट्स. इट डिपेंड्स अपॉन द डिमांड. सो the first thing is that you should have a good portfolio followed by collaborations so that people know you कि इस चीज के साथ काम कर रहे हो. कॉन्टैक्ट्स बनाओ धीरे धीरे, बिजनेस को बिल्ड करो धीरे धीरे बेसिकली. एंड इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, रातों रात नहीं होता. तो डोंट गेट डिसअपॉइंटेड. ऑलवेज टेक योर क्रिटिक्स एज अ मेजर टू ग्रो. कभी कोई आके आपको बोल दे कि ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, तो डीमोटिवेट होके मत बैठ जाना. जो आपको लगता है सच में सही नहीं है उसको ठीक करो, जो आपको लगता है ऐसे ही बोल रहे हैं ये, तो उसको इग्नोर कर दो. Okay. So till then we'll just अभी तो questions हो गए हैं. Let's just continue with the makeup till then.
And now I will pack it with some powder. So I'm using the banana powder from Forever 52, and we'll start from the under eye. So here you can see we are packing our makeup using okay, we are packing our makeup using a translucent powder here. So हम क्या कर रहे हैं, जो भी एरियाज हमने पैक करने हैं हम वहाँ पे अपना पाउडर को प्लेस कर रहे हैं, स्पेशली उन एरियाज में सबसे पहले जहाँ पे क्रीसिंग ज्यादा होती है. फॉर एग्जाम्पल आईज के नीचे आपकी क्रीसिंग होगी, आपके लिप एरिया के पास काफी सारी क्रीसिंग होगी, तो आप इन एरियाज को बहुत ही अच्छे से आप ट्रांसलूसेंट पाउडर की हेल्प से सेट कर देंगे. प्लस अगर आपको ऑयल वगैरह स्वेट वगैरह बहुत ज्यादा आता है तो ये चीज उसमें भी हेल्प करेगी. एंड ऑल्सो अगर आपको अपनी नोज कॉन्टोरिंग को और प्रोमिनेंट करना है तो आप ऐसे पाउडर को लगाओगे तो आप देखोगे कि मेरा कॉन्टोर प्रोडक्ट अचानक से और हाईलाइट होता है. So that's how it is highlighted. And you will just remove the excess. And I will be using this mascara from Smashbox. ठीक है. और this is for volume, mainly for volume. See the volume it has added. उसके बाद I will use another mascara for the length. तो लेंथ के लिए मैं यूज कर रही हूँ माई ग्लैम का ये मस्कारा, मनीष मल्होत्रा की कलेक्शन है ये. दिस इज फॉर लेंथ. वॉल्यूम ऐड करने के बाद मैं एक और लेयर ऑफ मस्कारा ऐड करूंगी. To see how nicely I have uplifted my lashes. And the same you can use it on the. So you can see here we are applying our mascara. हम यहाँ पे अपना मस्कारा जो है वो अप्लाई कर रहे हैं. So yes, ladies, if you have any more questions, please let us know. And I use a blush. I'll intensify my blush also. So the blush that I use is from the same palette. जो ब्यूटी ग्लेज का पैलेट है उसमें ब्लश भी है. तो आप ये देखो बड़ा फ्रेश पिंक कलर है ये. And I'll use a little bit of keep filling my brows. आईब्रो फिल करने के लिए मैं ये डिप पोमेड यूज कर रही हूँ फ्रॉम पैक कॉस्मेटिक्स. शेड है सेडर क्रेम. वी विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम आवर. यू विल टेक द प्रोडक्ट एंड डाइल्यूट इट ऑन द बैक ऑफ द कवर. उसके बाद आप शुरू करेंगे अपने आँख से. पहले तो आँख को शेप कर लो अच्छे से.
So yes, ladies, you can see here we are filling up our brows. जो हमारी brows है उन्हें fill कर रहे हैं and you can see हम बिल्कुल dark shade नहीं use कर रहे. We are not using black here. We are trying to use brown so that हमारा जो eyes है वो थोड़े natural दिखे. And plus you can see we did not start it right from the beginning. एकदम starting जो है brows की वहां से नहीं start किया था हम लोगों ने. थोड़ा सा हम लोगों ने पीछे से almost अपने center से start किया था and then हम slowly उसको fill in कर रहे हैं. जैसे जैसे फिल इन करते जाएंगे सबसे लास्ट में जो भी प्रोडक्ट हमारे ब्रश में बचेगा बस हम उसको यूज करके फ्रंट को फिल इन करेंगे अदरवाइज आपकी ब्राउज बिल्कुल बॉक्सी दिखने लगेगी ओके Exactly. Because the hair growth is very scattered on this part of your eyebrow, so you'll just use the residue and give a shading like this. okay issue for your question try using a translucent powder because banana powder on your skin tone might give you a kind of yellowness so it is better to go for a translucent powder rather going for a banana powder. And I will complete my base with the highlighter, which is from Forever 52. I'll be using this shade. अगर आप मेरे से डार्कर स्किन टोन में हो तो आप गोल्डन यूज कर सकते हो मेरे से या मेरे जितने मेरे से लाइटर हो तो शैम्पेन कलर यूज करोगे. So you can see जो हमारे फेस का जो हाई पॉइंट्स है हम वहां पे उनको हाईलाइट कर रहे हैं हाई पॉइंट्स यानी कि जहाँ पे आपका सन रेज जो होती है वो नेचुरली फॉल करती है सो उन एरियाज को आप बेसिकली हाईलाइट करते हो ताकि जब आप सन में जाओ और आप ऐसे मूव करो तो आपका फेस लगे जैसे ओके इट्स अ वेरी हेल्दी स्किन एंड वो शाइन कर रही है. And now we will do our lips. So I have already created the extra volume on my lips. I will just use a लिप लाइनर. तो मैं ये 530 शेड यूज कर रही हूँ फ्रॉम Kiko Milano. Not using much of it. I will take the lip tint from Love Earth. Fill my lips. The forever that sorry the highlighter that Ayushi used here was by Forever 52. साक्षी इल्यूमिनेटिंग क्रीम जो है वो स्विस ब्यूटी की इल्यूमिनेटिंग क्रीम है ओके आयशी आप लास्ट में एक बार अपनी इल्यूमिनेटिंग क्रीम दिखा दीजिएगा प्लीज. मैं भी दिखा देती हूँ. ये लो. ये स्विस ब्यूटी की पर्ल इल्यूमिनेटिंग बेस है. सिल्वर पिंक शेड है. And now I'll just top it up with a gloss. So the gloss that I'm using is from Fenty Beauty in the shade Fussy. So this is a clear gloss with a tint of like not tint, but it has pink particles, shimmering pink particles. ग्लॉस का कोई कलर नहीं है बट वो शिमरिंग पिंक पार्टिकल्स की वजह से एक इल्यूजन आता है थोड़े पिंकनेस का. एंड यू डू नॉट हैव टू जस्ट पुट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्लॉस. ग्लॉस इज फॉर शीन बेसिकली एंड नॉट फॉर हाइड्रेशन. तो आप इसको बहुत थोड़ा भी लगा सकते हो. जस्ट मेक श्योर कि आप अपने क्यूपिड बो को बहुत अच्छे से हाईलाइट करो.
So you can see here we are using a gloss by Fenty Beauty. Fenty Beauty का हम gloss यहाँ पे use कर रहे हैं. And remember, gloss बहुत ज़्यादा नहीं use करने की ज़रूरत है. आप थोड़े में भी आपका काम हो जाएगा, because gloss basically होता है आपको एक sheer provide करने के लिए rather than moisturization. So उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा use करने की ज़रूरत नहीं है. थोड़े से में ही it is going to give you a good effect. एंड वी ऑल्सो डोंट रियलाइज कि जब हम बहुत ज्यादा ग्लॉस प्रेस कर करके यूज करते हैं तो लिपस्टिक का टिंट हमारे ग्लॉस पे आ जाता है, ओवरऑल शेड ऑफ ग्लॉस स्टार्ट्स to change after every use. So make sure you apply with very little pressure and very minimal amount. And our look is complete. So you guys can let us know how do you like it, and any questions, happy to answer. Okay. So no, we do not have any questions now, but okay, it's a very, very beautiful look. मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है थोड़े से creative से look. So I'm really liking it, and people here also love the look that you have created. So yes, ladies, if you want to let us know anything more, please let us know in the chat box. And I think it was a very good session with you, Ayushi. Thank you, Saloni. You are a great, great host and a very lovely audience, I must say. Thank you so much. So yes, ladies, I hope कि आपको आज सारी की सारी चीजें समझ में आई होंगी and everything is clear. We will share the picture with you in the on the Instagram also. आयुषी अपने Instagram पे share कर देंगी. आयुषी, can you please let them know your Instagram ID? It's Ayushi, single Ayushi, double underscore artistry. Again, single A. So you guys can follow me, you guys can post your looks, and I'll repost it, provide you the review. And yes, of course, you can tag me, you can tag Pankhuri. So yes, ladies, if you do recreate this look, please tag Ayushi on her Instagram. You can tag us also on the @ Ask Pankhuri pay, and we'll be more than happy to see them. We'll be more than happy to see your results in the course group also. So if you do try to make these, please share it with us. And we will share the picture in the course group itself. Course group में आपको इस look की picture मिल जाएगी. You can see there, you can check it out. And till then, bye bye, take care, and have a great day, ladies. Thank you so much, Ayushi. Bye, Saloni. Bye, everyone. Thank you. Bye bye. So, thank you so much, ladies, for joining us today. I hope to see you all in the next session. And please do not forget to subscribe to the YouTube channel because we come live twice a week and you don't want to miss our sessions. So, till then, bye bye, take care, and have a great day, ladies. Bye bye.